Now the title is Economics of Machining. A very important topic, sir. Economics of machining, a very, very important topic. We'll start आराम से, कोई भी टेंशन की बात नहीं है. चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर. एक्चुअली when questions come from this area, to be honest, they are simple questions, but understanding this is a bit confusing. So I'll try my level best so that you understand everything in a systematic manner. Machining economics. Why are we studying this topic? ये topic क्यों पढ़ रहे हैं हम? Definitely the final aim is whatever the product you are manufacturing, you should manufacture at the minimum production cost. And you should also manufacture with high productivity. What do you mean by high productivity? In less time. There are two aspects actually. There are two aspects. One is high productivity. What does high productivity mean? Less production time. Whatever the product you are manufacturing, it is manufactured at less production, in less production time, in less time. Definitely, in lesser time when you are manufacturing more, so definitely the company will make profits because the time saved, whatever the time you are saving, so that you can invest that time somewhere. The next one is low production cost. Whatever the cost we are manufacturing, whatever the cost is there, total cost, it should be minimum or minimum production cost. Minimum production cost. Very good. The time that you are taking to produce there are two aspects of economics of machining. There are two aspects. One is you are manufacturing in lesser time. So if you are manufacturing in a lesser time, so definitely you will produce more products. More products का मतलब क्या है sir? High productivity. Next, the second, because if the demand is more, listen carefully. In market, say the demand is very high. If the demand is very, very high and you are producing more products in less time, definitely you will meet the market requirement and thereby you will earn lots of profits. Point number one. That is one aspect. Second is, whatever the cost that is incurred in producing one particular component, it should be minimum. There are two different aspects. Don't combine these two. दो अलग-अलग concepts है sir. Less production time is a separate topic, separate concept. Low cost is separate topic. ध्यान से सुनो sir. When the production time is less, the cost may not be less. Cost कम होना जरूरी नहीं है. You are saving time. When you are going for low production cost, the time may not be minimum. दोनों अलग अलग है सर. जो भी आपको कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है, whatever is the requirement of a company manufacturing concern, you'll go for that. So I will give you best concepts of this. ठीक है सर. Before we go, ध्यान से सुनो. Now, the first concept that you are discussing is maximum production rate
or less time. ठीक है सर. Now before, देखो ध्यान से सुनो सर. Here, let us not involve any cost. We are concerned only with time. दोबारा बता रहा हूं सर. यहां पे we are concerned only with time, nothing more than that. ठीक है सर. Actually, what I do is, सबसे most important part I have taught you very clearly. Which parameter is playing a vital role on tool life? I repeat, sir. Which parameter is playing a vital role on tool life? Arey yaar, what is happening? No one is answering. Velocity, exactly. It is the cutting velocity, sir. The cutting velocity plays a very, very important role. Therefore, I will divide the times in two parts. One is the time which is depending on velocity, cutting velocity. Here when I say velocity, it is cutting velocity. And the time which is independent of velocity. Got confused? Chalo, for example, I'm loading a component on the machine. Look at carefully. So I have not started running the machine. Before that, I have to load the workpiece. पहले क्या करना चाहिए? Workpiece को load करना. Then tool को load करना. क्या ये cutting velocity पे depend करता है सर? Does this time depend on cutting velocity? बोलो, बोलो, बोलो सर. No. 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 अरे यार, मैं देखो टूल को सेट कर रहा हूं एंड देखो आई एम लाइक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर? अरे यार क्या स्टूडेंट्स है रे. When I'm loading the workpiece on the machine on ही नहीं हुआ. And this is known as part handling time. I repeat, this is known as. तनुज मैं क्लास में हूं बेटा. लाइव एंड हो गया ना ऑलरेडी. एक बार मैं देख लेता हूं अभी. ठीक ठीक ठीक. ओके ओके. 1 second please. One second please. छोटा सा प्रॉब्लम हुआ.
I'm sorry. एक second. Just give me. Just wait, sir. तो कुछ गड़बड़ हुआ. पता नहीं यार. एक second. राइट, नो प्रॉब्लम. आई एम रियली सॉरी, माफी चाहता हूं. आई एम रियली सॉरी. हाँ, देखो अभी सब सही है सर. ओके, नाउ ये है मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट. एक सेकंड. इसमें सारे ऐसे करेंगे, बहुत केयरफुली देखना सर. द मोस्ट इंफ्लुएंशियल पैरामीटर इज कटिंग वेलोसिटी. If you focus on cutting velocity, problem will be solved. So यहाँ पे we are making some assumptions. The assumptions are the feed, the depth of cut is kept constant. We are not changing feed and depth of cut. The most important assumptions are very important. Assumptions. Feed and depth of cut are constant. Means वो change नहीं हो रहा है सर, उसको वैसे ही रखें. ओके, अब देखो. हाँ, वही बता रहा हूं, आ रहा हूं. ये assumption है सर. अब देखो. Now my dear students, first क्या करेंगे सर आप? Look at non-productive time. What do you mean by non-productive time? You will be like mounting the workpiece. Then during that time, the machine is not running. So that time is independent of the velocity of cutting. That is known as part handling time. That is known as part handling time. Something like loading the workpiece, unloading the workpiece. So therefore, the first time is in this part handling time. It is the time during which, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. मुझे लगता है कि अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे थोड़ा कंफ्यूजन है सर. इफ यू रीड टेक्स्ट बुक्स इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग. सो आई वांट टू सिंप्लीफाई एंड रिमूव दैट कंफ्यूजन. ओके, इट एंड क्वेश्चंस भी थोड़े कंफ्यूजिंग है सर. दैट्स व्हाई लेट्स डू all lengthy questions. It is the time during which the part in bracket workpiece is loaded and unloaded. It is the time during which the part or the workpiece is loaded and unloaded. And clearly read, this time is independent of cutting speed. This time is independent of cutting speed. And इसको बोलते हैं this time is also non-productive time. And let us designate this time with TH. Can you tell me what is TH, sir? My Groover books में से लिया sir. I have taken from Groover book. What is TH? It is the handling time, part handling time. It is the part handling time. You are loading the workpiece on the machine and you are unloading all the times put together. एक बार देखो workpiece को machine कर रहे हैं. We are machining workpiece. So before that, the workpiece is held in a check. You are mounting on the tool. Sorry, you are mounting on the machine. तो workpiece को हम क्या कर रहे हैं? टूल पे डाल रहे हैं. Sorry, machine tool पे डाल रहे हैं. Machine पे. So you are loading, unloading, all this comes under what time? All this comes under what time?
part handling time. It is non-productive time. It has nothing to do with the velocity of the cutting. Is the first time clear, sir? Clear? Clear, sir? It has nothing to do with the cutting velocity. Second, machining time. मैं ग्राफ्स गिव्स कुछ नहीं बता रहा हूं सर, तो आप बोलेंगे सर धोखा दे रहे हैं. देखो, फर्स्ट I will develop equations. Once I develop equations, from those equations, I will develop graphs. You love that. It is a different method, sir. मतलब मेरा approach totally different है. Generally, you see people teaching you with graphs first, then developing equations. No. My equation develop करने के बाद, I will give slope. Once the equation is known, I can easily, देखो कर्व देखकर आप इक्वेशन डेवलप नहीं कर सकते सर, इक्वेशन देखकर कर्व डेवलप कर सकते सर, नॉट उल्टा. आई रिपीट सर, बाय लुकिंग एट द कर्व में भी पैराबोलिक, क्यूबिक, देख के कैसा बोल सकते नहीं, बट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन आई कैन डेवलप द कर्व. आई होप यू अंडरस्टूड, नॉट द अदर वे. मशीनिंग टाइम. Let me designate this with TM. It is the actual time during which the workpiece is machined. It is the actual time for machining a single product. एक product के लिए ध्यान से सुनो. In this chapter, all calculations are based on single piece. एक piece के लिए हम calculate करेंगे. ध्यान से सुनो. Generally, we calculate for a single piece. If there is a batch of say 1000, if there is a batch of 500 units, then I multiply with 500. I multiply with 1000 depending on the size of the batch. So first what I do is I will try to develop the time required for machining a single component. So once ये बहुत important है sir. If this is lost, everything is lost. All calculations are based on the time for single piece. देखो, this is the part handling time. एक पीस को वर्क पे मशीन टूल में डाल रहे, लेथ मशीन पे डाल रहे, लोडिंग देन अनलोडिंग फॉर सिंगल पीस. द फर्स्ट वन इज फॉर सिंगल पीस टीएम. इट इज द एक्चुअल मशीनिंग टाइम टू मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है सर. अभी कुछ है सर, सुनो. थर्ड, टूल चेंजिंग टाइम. मैं गुरुवार किताब लिया सर, ये वाला किताब देखो, ये वाला किताब बेस्ट बुक, तो वहां के नोटेशंस दे रहा हूं सर. टूल चेंजिंग टाइम. सुनो केयरफुली. यू मे बी वंडरिंग, सुनो ध्यान से सुनो सर. आई एम कटिंग, machining is going on, and let us say my tool is developing so many pieces, but after some time, every tool has a life. So definitely after manufacturing some work pieces, after developing some pieces, final products, the tool may lose its sharpness. The tool, we may have to regrind the tool. क्या करना चाहिए सर? We have to change the tool. ऐसा नहीं कि वही टूल, ध्यान से सुनो सर, we have only one tool, उसी पे डिपेंड हो रहा है. नो, we have different tools. लेकिन once that tool is over, once that tool loses its life, I remove that and I'll introduce a new tool. So definitely there is a time required for changing the tool. Understood or not, sir? There is a tool changing time. अरे यार बोलो. Let us say I am manufacturing 1000 components. So maybe after manufacturing 30 pieces, the tool might have lost its sharpness. Then I have to change the tool. Should I not include that? Because that is also involved in machining, That time is also involved in machining, Therefore, there is a tool
changing time. You have to change the tool. Dekho, you have loaded the workpiece. Very good. You have loaded the workpiece. Very good. You have machined the workpiece. Very good. But when you are machining in batches, definitely after some time, you need to change the tool. टूल को चेंज करना पड़ता है क्योंकि टूल अपना शार्पनेस खोता है, तो आई हैव टू चेंज द टूल. सो नाउ दिस, इसको लिखेंगे द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द टूल आफ्टर its tool life is reached. समझ में आ रहा है सर? The time required to change the tool after its tool life is reached. मतलब उसका tool life reach होने के बाद I have to change. So there are three times. There are three times. And I want to minimize this total time. So what is the total time? Total time is tool changing time, then machining time, then बोलो part handling time. एक what do you mean by handling time? Loading, unloading. उसको set भी हम वर्कपीस को सेट कर रहे हैं मशीन टूल पे, सेटिंग टाइम भी बोलते हैं सर. ओके राइट. यहाँ पे एक there is one small problem sir. There is no problem with first two times. The first time is part handling. The workpiece I am loading, then unloading. So it is, for example, for loading I am taking, let us say for loading I am taking, let us say 50 seconds. For unloading I am taking, let us say 20 seconds. So what is the tool part handling time? 50 seconds plus 20 seconds, 70 seconds. So that is part handling time. But that is for single piece only, na? The single piece is loaded, single piece is removed. That is for single piece. Machining time, it is also for a single piece. But if you see the tool changing time, there is a complication, sir. Now I have a simple question. Look at carefully. I want to break something. Suno dhyan se. I want to break this into pieces. So with hammer I am hitting. Look at carefully. I want to break something. With hammer I am hitting. Will it break in a single hit? अरे यार आई एम हिटिंग इट, क्या एक हिट में ब्रेक होगा? नहीं, मे बी सम आफ्टर 20 हिट्स. Let us say 19th hit is over. So now exactly at the 20th hit, एक बार 20 बार मारने के बाद वो टूट गया. तो can I say only 20th hit is responsible for breaking the that workpiece? No, na. So as I am cutting, first workpiece I have manufactured, second workpiece over, third workpiece over, fourth, ऐसा करने के बाद, let us say in the 13th workpiece the tool got damaged. Now I am changing the tool. So for changing that tool, only that 13th component is not responsible. All the previous components are also responsible for that. नहीं है सर, समझ में आपको? So all the previous are also responsible. You have not understood, sir. मैं बोल रहा हूं सर, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूं, when the tool is losing its life, suppose I have manufactured 13 components. Now 14th component आ रहा है. It's not the 14th component alone that is responsible for the damage of the tool. All the earlier are also equally responsible for the failure of the tool. That's why tool changing time, what we do is, whatever the time is there now, I will divide with number of pieces that are manufactured before changing the tool. You have not understood, sir. मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, I manufactured 13 pieces before changing the tool. I manufactured 13 pieces. Number of pieces that I have manufactured is 13 before changing the tool. देखो, first piece, brand new tool. First piece, beautiful. Second piece, beautiful. 10th piece, beautiful. 12th piece, beautiful. 13th piece, beautiful. And after 13th,
Now I have to change the tool because it cannot fabricate or manufacture the 14th workpiece. The tool has lost its life. So मुझे बताओ, is the 13th component alone responsible for the failure of the tool? No. Whatever the tool changing time is there. For example, let us say the tool change time is 2 minutes. The tool change time is 2 minutes. That means all the earlier 13 components are responsible for the change, for changing this. Otherwise, if I do not manufacture those 13 components, there is no need for you to change the tool. Therefore, I will give all equal weightage. देखो, for example, एक छोटा सा example देता हूं सर. चलो, मान लो एक simple calculation के लिए एक second सर. Please मेरे प्यारे बच्चों, you should understand this concept very carefully. For example, मेरे प्यारे दोस्तों, let us say we have manufactured 6 parts. Number of parts manufactured 6. Number of parts. Let us say the tool changing time is TT is tool changing time. Tool changing time. Let us say it is 6 minutes. Imagine, just example के लिए बता रहा हूं. What does it mean, sir? We are all calculating for single piece. We all are calculating for single piece. The total tool changing time is 6, but all other earlier components are responsible for the failure. So for each piece, I have to give equal. So therefore, the tool changing time per piece, before changing this tool, how many pieces have you manufactured? 6 pieces. So all other earlier 6 pieces are responsible for the failure of the tool. Therefore, that's why you are now changing the tool. All are equally responsible. That's why I don't put the responsibility only on the last component before the failure. You people have not understood. क्या ये में समझ में आया? इसीलिए the tool changing time per piece is number of components produced before changing the tool. This is the right one, sir. नहीं आया आपको समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आई आपको? So all calculation, अब ये भी per piece होगा सर. देखो एक सेकंड. Machining time for single piece, part handling for single piece, tool changing time divide with number of components before changing the tool, how many parts you have manufactured, before changing the tool, how many you have manufactured, divide that tool changing time with number of pieces, that will give me tool changing time per piece. Choko tali. बोले रे बाबा, बाबा बोलो. क्लैरिटी आया सभी को? क्लैरिटी आया सभी को? आया ना? बहुत बढ़िया सर. देखो यहां पे मैं I'll write a golden sentence. कैसे लिखूं सर? एक सेकंड. I'll try my level best. One second, sir. यहां पे लिखूंगा सर. यहां पे क्लियरली आई राइट सो दैट नोट्स में भी करेक्ट हो जाए. देखो, लेट NP be the number of components or parts produced before changing. Sir, why are you not changing? Changing? क्या बोलता है रे? Sir, why not tool changing time is also included in non-production time? अच्छा. The tool changing time is dependent on the number of pieces you are manufacturing, and the number of pieces that you are manufacturing in turn is depending on the velocity of cutting. दोबारा बता रहा हूं. When you are loading the workpiece and removing when you are loading the workpiece and removing the workpiece, it has nothing to do with how many components you have manufactured before. The tool changing time will depend on the number of components that you have manufactured before. And number of components that you are manufacturing will depend on the velocity. समझ में नहीं आया सर? हर्षित समझ में आया?
अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी आया नहीं आया बेटा? What if the tool life is greater than machine time? We'll write that fraction. I'll explain na. Don't worry. Why do you worry? Why do you worry? Huh? Don't worry. I'll explain how to do that. Okay? Chalo. कहाँ गए रहे? Let NP be the number of components produced before changing the tool. Therefore, this TT का मतलब tool changing time. This TT का मतलब is equally distributed among all work pieces. Okay, now देखिए सर, hope you understood मेरे प्यारे बच्चों. If this is clear, I will proceed, sir. Now, the total time will be equal to part handling time. This is non-productive. Part handling time plus machining time. देखो, this is part handling. This is for a single piece. How much time you are taking to load and unload a single piece? This is per piece. What is the machining time for a single piece? This is also per piece. This is the tool changing time. And I should divide equally. Therefore, divide with NP, where NP is number of pieces produced. शायद आपको ये समझ में आया होगा. Hope you understood, sir. So, is this equation clear, sir? Is this equation clear, my dear loving students? Exactly. This is per unit. This is the time required per unit per piece. This इसका unit होता है so many minutes. If the time is expressed in minute, so many minutes per piece. So many minutes per piece. एक पीस प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? दिस इज शोइंग इट इज पर पीस. होप दिस इज क्लियर. प्यारे बच्चों, क्लियर है? प्यारे बच्चों, क्लियर है? अंडरस्टूड सर. ध्यान से सुनो, यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मशीनिंग टाइम. मशीनिंग टाइम for a single piece. Suppose you are turning a workpiece of length L. Let us say the length is L and the feed is F and let it rotate at N. याद है sir? I don't know whether you remember or not. I have derived the equation. The machining time is equal to L by Fn. Anyone remembers this equation, sir? Do you want me to derive again? Anyone remembers this equation or do you want me to derive again? I have already given, sir. I have already explained. This is the feed velocity. This is the feed velocity and this is the length of cut, complete length. Okay, sir. Wait. Generally, the machining time is kept in minute. Generally, उसको हम minute में रखते हैं. And velocity is equal to cutting. This is the cutting velocity. This is the cutting velocity. And the cutting velocity is given by pi dn, where n is the speed in RPM. I'm not dividing with 60. Can anyone tell why are you not dividing with 60? Because D I'll keep it in meter. D को meter में रखो, D को meter में, and n is in RPM. So what will be the unit of cutting? देखो, D is meter, pi has no unit, rotation का कोई unit नहीं. रोटेशन कोई यूनिट नहीं, रोटेशन बता रहा है पर मिनट, रोटेशन पर मिनट. सो इट इज मीटर पर मिनट. सो दिस विल बी इन मीटर पर मिनट. एब्सोल्युटली फाइन. इज इट क्लियर? बहुत केयरफुल देखो, समझ में आया नहीं सर? अब देखो, कैन यू गिव मी
the value of n, sir. If you want n, it will be v by pi d. I repeat, sir. अगर आपको rotational speed n चाहिए, it will be v cutting velocity by pi d. So when I'm writing v, actually it is velocity of cutting. When I'm writing v, it is velocity of cutting. If it is other than cutting velocity, I will clearly mention. If it is a shear velocity, v shear. If it is a chip velocity, v chip. If I am not writing anything with velocity, it means it is a cutting velocity. वो थोड़ा याद रख लेना. ठीक है. So what is the machining time, sir? मेरे प्यारे बच्चों, can I write machining time as L by F N? What is N, sir? V by pi d. So therefore, the machining time is given by pi d L by F into V, a very important equation. I repeat, sir. So this pi d will go to the top. Pi d L by Fe, pi d L by Fe. This is the machining time. This is the machining time for a single piece. So, for example, if there is a piece of length L, and if the piece is of diameter D, and if the feed is F mm per revolution, feed is F mm per revolution, and n is the rotation speed, then this is the time. Hope you understood, sir. Hope you understood, sir. Machining time आ गया, sir. Machining time आ गया. This is the machining time. Now next. ध्यान से सुनो, sir. Fourth. Let the tool life be capital T. Let the tool life be capital T. मतलब एक tool का life है capital T. Now I have a question. Tm is machining time for a single piece. इसका मतलब यह है, सपोज, ध्यान से सुनो सर, सपोज in 2 minutes I am manufacturing each piece, single piece. Let it be Tm. ध्यान से सुनिएगा सर. Let it be Tm. मतलब in 2 minutes we are manufacturing one piece. That is only machining time. Only machining. Only machining time is 2 minutes. Let the tool life 20 minutes. Means after 20 minutes you have to change the tool. The tool life is over. So now you tell me, during that one tool life, how many components can be manufactured? During that, how many components can be manufactured? For one component, it is taking 2 minutes. For one component, it is taking 2 minutes. एक component के लिए machining time है 2 minutes. The total tool life is 20 minutes. तो 20 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा मेरा tool. I have to change the tool. It means for one piece it is taking 2 minutes. For 10 pieces it will take 20 minutes. So 20 minutes के बाद it will lose its life. So before it fails, the number of pieces that can manufacture is 10. How did you get the 10? That 10 is obtained by total tool life by machining time of single piece. This is the equation for NP. Please बताइए, is it clear, sir? Is the number of components that you are producing, is it clear, sir? नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर. So therefore the number of pieces produced, मेरे प्यारे बच्चों, number of pieces produced is equal to NP is equal to total tool life by machining time. Total tool life by machining time per single. I think it is clear. Hope this is clear. Clear, sirs? All of you? Right, sirs. Understood. Now you also know, according to Taylor's tool life equation, V t power n is constant, where t is the tool life. So if you want t, it will be c power 1 by n by v power 1 by n.
Is it clear, my dear loving students? Is it clear, my dear loving students? Yes, sir. Yes, sir. So, yahan se you can get the tool life because the tool life is based on cutting velocity. ठीक है sir. तो आप बोलेंगे सर टूल लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट ना वी आर नॉट चेंजिंग बिकॉज इन द टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन देयर वाज फीड देयर वाज डेप्थ ऑफ कट but here I am assuming feed and depth of cut constant, therefore we are changing only the major parameter which is influencing the tool life, that is cutting velocity. ठीक है sir. Now can I calculate the number of pieces that we are manufacturing? देखो capital T, अरे यार क्या हो रहा है मेरे स्टूडेंट्स को हो क्या रहा है? The number of pieces that you are manufacturing is, देखो सर, capital T. What is capital T? C power 1 by n by V power 1 by n. This is capital T by machining time. Already you know the machining time. देखो इधर देखो, what is the machining time sir? Pi dl by fv. So machining time is pi dl by fv. If you say yes, then I will proceed sir. मैं कुछ नहीं किया sir. The number of pieces that you are producing is equal to capital T, that is tool life. I have written tool life by machining time. Okay. So therefore, मेरे सज्जनों, मेरे प्यारे दोस्तों, number of pieces is equal to C power 1 by n by V power 1 by n. इसको ऊपर ले लो तो it will be FV by, गलत किया था सर, हाँ बिल्कुल सही है, FV by pi dl. Absolutely fine. Anyone has any difficulty? Absolutely no difficulty. तो now you are left with everything, मतलब सारा आ गया सर. अब देखो, so I will take this. This is NP. And what is the machining time, sir? This is the machining time. चलो, कोई बात नहीं sir. And you know, the total time is given by the part handling time. This part handling time has nothing to do with machining. मतलब एक tool to install a workpiece on the machine tool, एक वर्कपीस को मशीन लेथ मशीन पे डालना या फिर जो भी मशीन है उसके लिए स्पीड मीड की कुछ जरूरत नहीं सर. लोडिंग एंड अनलोडिंग, it is independent of velocity. Then machining time, then the tool changing time. This is tool changing time by NP. We are distributing equally per piece. Sub values put karna sir. It will be TH plus what is machining time? You have machining time. It is pi dl by FV. This is machining time plus TT by NP. What is NP sir? देखो TT by NP. NP क्या है सर? C, देखो NP C power 1 by n FV by V power 1 by n pi dl. So therefore T will be equal to TH plus pi dl by FV plus ये ऊपर जाएगा pi dl by FV. This will go to the top. Pi dl by FV into V power 1 by n. एक सेकंड सर. Pi dl V power 1 by n FV by C power 1 by n into TT. Please tell me, is it clear, sir? अरे यार ये हर्षित गलत कर रहे हैं सर. आप हर जगह आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. इसमें क्या है सर? लास्ट का स्टेप पूछ रहा है. ऑलरेडी आई हैव गिवन दिस इक्वेशन. ये आपका लैग होने से पहले ही ये इक्वेशन दिया. सो वी हैव कैलकुलेटेड मशीनिंग टाइम L by Fn. N का देखो V is pi dn. तो ऑलरेडी मैं N I have replaced N in terms of velocity. So you got machining time. So TH machining time. And then tool changing time, TT, tool changing time by NP. What is NP? Number of pieces that you are producing before changing the tool. And I explained very clearly. Very clearly, number of pieces. For example, each piece machining time is, for example, 2 minutes. And if tool life is 20 minutes, how many pieces are you manufacturing before failure, before changing the tool? Number of pieces that you are manufacturing is, each cutting time is 2 minutes.
Each piece cutting time is 2 minutes. So the tool life is 20. After 20 minutes you are changing. Means in 20 minutes, for one piece it is 2 minutes. For 20, you are manufacturing 10 pieces. How did you get 10? 20 by 2. 20 by 2. So therefore it is capital T by Tm. So वही तो किया sir. Capital देखो इधर capital T by Tm. Tool life is given by Vt power n is equal to constant. T is tool life. T is tool life. The tool life can be obtained from Taylor's equation. Tool life can be obtained from Taylor's equation. Vt power n is constant. So T is equal to C by V. T is equal to C by V. देखो T is equal to C per 1 by n V per n. T आ गया. Already machining time is over. Number of pieces is equal to tool life. Already you know tool life divided by machining time. ये लिखा. और क्या दिक्कत है sir? And all NP. तो यहाँ पे everything is there. Already you know TH. Okay. Machining time I have put. Then TT by NP. Number of pieces अभी तो calculate किए. Number of pieces. Say this value हो गया sir. अभी भी नहीं है ये. पता नहीं है. I don't understand what he is doing. अभी भी उसको नहीं आता. फिर बाद में फिर कुछ पूछता है. It's all wastage of time sir. नहीं समझ में आया नहीं है. अभी तो हर्षित एटलीस्ट अभी तो समझ में आया. पक्का. नेटवर्क थोड़ा अच्छा ढंग का कर लेना. सस्ता मत लेना. अभी तो क्लियर हुआ. हाँ जी सर. अब देखो प्लीज प्यारे बच्चों इधर देखो. ब्यूटीफुली देखना सर. T is equal to TH pi dl by FV plus pi dl by FV. नहीं किसी को समझ में नहीं है. मैं कुछ नहीं किया सर. V means V power 1. I have taken this V to the top. इस V को ऊपर लिया तो V power 1 by n minus 1. V power 1 by n minus 1 हो गया. F C power 1 by n. Yes, खत्म. Is there any difficulty sir? Is there any problem in understanding this particular equation? This is part handling time. This is part handling time. Part handling time. This is machining time. This is tool changing time. Of course, everything is per piece. Everything is per piece. अब इसको लेके हम आगे जाएंगे सर. We got everything. Now we'll take this. चलो अभी थोड़ा ग्राफ्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे सर. नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ्स. राइट. गुड. माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, ऑन दिस एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों, on this axis I am taking cutting velocity and on this axis I am taking time. बहुत बढ़िया. On y axis I am taking time and on x axis I am taking the cutting speed. इसको लिखेंगे cutting velocity and this is time per piece. याद रखना सर, all calculations are per piece. Very good sir. वेरी गुड. अब सुनिए सर. जनरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? आई हैव गिवन यू सर. आई थिंक फॉर हाई स्पीड स्टील्स इट इज 0.2 और समथिंग लाइक 0.15 समथिंग लाइक दैट. सिरेमिक्स के लिए 0.6 ऐसा बढ़ते जाता है. आई थिंक आई हैव गिवन वैल्यूज. याद रख लेना. वेरी गुड सर. द फर्स्ट टर्म दैट इज पार्ट हैंडलिंग टाइम. The first term part handling time, is it dependent on velocity? इसमें कोई velocity का term है क्या?
when you are loading the workpiece and unloading the workpiece, will it consume or will there be any influence of cutting velocity? You know, there is no, the machine is not at all running. So this time, for example, this time is 2 minutes, let us say. On this axis, I'll take 2 minutes. So let us say this is 2 minutes. And you know very well, it is independent of, I repeat, it is independent of, kya hai sir? Independent of? Yes, velocity. So therefore, this is, anyone, what is this sir? This is non-productive time. इसको non-productive time भी बोलते हैं. And this is representing actually, my dear loving students, इस पे देखो, इस पे कोई influence नहीं है velocity का. Something like t is equal to constant. So t is equal to constant on t means y-axis. Y is constant means parallel to x-axis. This is part handling time. Wonderful, sir. Part handling time. Excellent, sir. देखो. Next. Machining time. देखो. The machining time is given by pi dl by fv. Pi, this is machining time. The second term is machining time. The third is tool changing time. My dear loving students, the machining time into V is equal to pi dl by f. Length of the workpiece is fixed. The diameter of the workpiece is fixed. Already I took field constant. This is constant. It is something like, this is, t is time is on y-axis. V is velocity is on x-axis. It is something like xy is equal to constant. It is a rectangular hyperbola. In thermo also you have seen. Iska matlab kya hai? The product is constant. When one is increasing, other is decreasing. So hope you understood. The nature of the curve is a rectangular hyperbola. Because machining time, on this axis I am taking time. Any time. Tool handling time ye hai, to ye th hai sir. Now I'll take machining time. Machining time into velocity. Velocity is x. Machining time is on y-axis, and diameter is constant, length is constant, feed is constant, xy constant. Xy constant is a rectangular hyperbola. In thermodynamics, you have seen PV diagram. The isothermal, for isothermal process, PV is constant, it is a rectangular hyperbola. So therefore, my dear loving students, if you see the machining time, the machining time is given by प्यारे सज्जनों. The machining time is given by, like, इधर देखो क्या मतलब हुआ सर? नहीं आया रे. Anyone, what is this sir? It is machining time. Machining time TM. बहुत बढ़िया. So what is the one? Are these cases in which machining time is less than the part? There is a possibility, sir. Every possibility. क्या है? Yes, every possibility. We are not ruling it out. हम कोई specific cases नहीं ले रहे sir. Okay, now, if you understand clearly why it is happening, आप एक बार बता सकते sir? Obviously, when you are cutting it at a higher speed, it is taking less time to manufacture a single component. देखो एक बार समझ में आ रहा है sir? So when the cutting velocity is increasing, time required will be less. When you are doing at a faster speed, definitely the time required will be less. So therefore, as the time, देखो एक बार, if you see at this speed and this speed, as the velocity is increasing, the time required is decreasing. Hope you understood this. Is the second curve clear? If this is clear, I proceed, sir. क्या second curve clear हुआ, sir? पक्का?
Right, sirs. The second curve is third. Let us take the third one. So everything I'm explaining, sir, with reasons. Everything I'm explaining with reasons. Let's take the third one. Dear student, third one. देखो एक बार third वाला. The tool changing time. The tool changing time. Tool changing time. लेकिन it is per piece. Tool changing time per piece is given by pi dl by f c power 1 by n capital T into v power 1 by n minus 1. सुनो ध्यान से. Look at pi dl is constant. The diameter length is constant. Feed is constant. C is constant. Per piece it is constant. Tool changing time per piece. देखो जो TT है. एक सेकंड. TT is tool changing time. The tool changing time has nothing to do with velocity. Tool changing time. मतलब tool को निकाल रहे, tool को डाल रहे. When you are removing tool and installing, that is the tool changing time. Okay, very good. Now you tell me it is depending on what, sir? V, देखो, everything is proportional to V power 1 by n minus 1. बहुत बढ़िया, sir. Now, let us take n as 0.25. n तो less than 1 होता है, sir. Generally, for जो tools available है, it is less than 1. Generally, 0.6, 0.25, 0.3, 0.5. तो अब देखो, what will be V power 1 by 0.25 minus 1? So it will be 1 by 0.25 is 4. 4 minus 1, 3. Oh my God. Tool changing time is proportional to V cube. इसका मतलब क्या है, sir? When the velocity is increasing, the tool changing time is also increasing. What does it mean, sir? देखो सर, आप कैलकुलेट कर रहे हैं नॉट टूल चेंजिंग टाइम, यू आर कैलकुलेटिंग टूल चेंजिंग टाइम पर पीस. क्योंकि when you are cutting at high velocities, the tool will wear faster. When the tool is wearing faster, in less time, you have to, for example, if I am cutting at some 10 meter per minute, let us say the tool life is 20 minutes. Suppose I cut at 20 meter per second, the tool life may come down. So when the tool life is coming down, in less components, we have to change, but the frequency you have to change. That's why the tool changing time per piece is increasing. नहीं है सर आपको. Let me repeat, sir. If you have not understood, let me repeat. Why the tool changing time is increasing when the velocity is increasing? थोड़ा calm mind से सुनो. When the velocity is increasing, the tool life is decreasing. When the tool life is decreasing, so in that tool life, you are manufacturing only less number of pieces. That's why you are changing frequently. समझ में आ रहा है सर? That's why it is increasing. So therefore, now if you see, it is something like a curve. So it will be, so as the velocity is increasing, frequently you have to change the tool. So therefore, per piece it is increasing. So you will have something like this. Bhayo bhayno, you have something like this. Anyone, what is this? As it is directly proportional, देखो cube. When the velocity is increasing, the tool changing. This is tool changing time, not tool changing time per piece. देखो tool changing time per piece, tool changing time per piece. कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे पता है सर. मैं आपको आई विल एक्सप्लेन वेरी क्लियरली, डोंट वरी. सम पीपल हैव नॉट एट ऑल अंडरस्टूड. पता है सर मुझे. आई विल एक्सप्लेन. देखो एक बार मैं बता रहा हूं बेटा. देखो फॉर एग्जाम्पल, लेट द वेलोसिटी बी 10 मीटर पर मिनट. सो लेट द टूल लाइफ बी, मैं कुछ दे रहा हूं सर, लेट इट बी 30 मिनट. लेट द मशीनिंग टाइम बी 2 मिनट. So with this velocity, how many pieces are you manufacturing? Let us say the tool changing time, ध्यान से सुनो sir. Let us say the tool changing time is some 8 minutes. ध्यान से सुनो sir. What is this 8 minutes? Total time required for changing the tool. What does changing the tool mean? You are stopping the machine. You are removing the tool. निकाल दिए. Then you are loading the fresh naya tool. For the removing the tool and reloading the new tool, let us say it is taking 8 minutes.
विल इट क्या ये 8 मिनट चेंज होगा? नहीं, ये स्टैंडर्ड टाइम है सर. रिमूविंग द ओल्ड टूल, इंस्टॉलिंग द न्यू टूल, इट हैज नथिंग टू डू विद द कटिंग वेलोसिटी. रिमूविंग द ओल्ड टूल, इंस्टॉलिंग. लेट अस से मैं निकाल रहा हूं, चलो निकाल के क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं टूल को, देन पूरा अरेंज करके आई एम इंस्टॉलिंग न्यू टूल. सो दैट कंप्लीट प्रोसेस इज टेकिंग 8 मिनट. बट आर यू कैलकुलेटिंग दिस? नो, आई एम कैलकुलेटिंग पर पीस. I am calculating per piece. इधर देखो सर, you tell me how many pieces have you manufactured here? How many pieces have you manufactured? So therefore, it will be NP is equal to 15 pieces. Understood, sir? NP means is case one. This is case one. This is complete case one. So in case one, what is TT by NP? That is tool changing time per piece. It is 8 by 15. ये case one हो गया सर. ये केस वन हो गया. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. तो ऑन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में यू आर नॉट टेकिंग टीटी, यू आर टेकिंग टीटी बाय एनपी पर पीस. आप अपने ग्राफ में ये टाइम नहीं ले रहे सर, वी आर टेकिंग पर पीस. ठीक है, अब देखो, लेट अस टेक केस टू. लेट अस से द कटिंग वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड. मान लो 10 मीटर पर मिनट से हैव इंक्रीज द वेलोसिटी. व्हाट विल हैपन टू द टूल लाइफ? When I increase the speed, the tool life decreases. Why the tool life? I have told so many reasons. When the velocity is increasing, temperature will increase like anything. When the temperature is increasing, the tool life will decrease. So therefore, let us assume that the tool life is, let us assume that it is 20. मान लो सर, एक छोटा चलो, tool life is, चलो 10 ले लेंगे सर. Let us say tool life has reduced from, मान लो the original tool life was, देखो the original tool life at this velocity, this is the tool life. इस वेलोसिटी पे ये टूल लाइफ है, इस वेलोसिटी पे ये टूल लाइफ है, इस वेलोसिटी पे ये टूल लाइफ है, इस वेलोसिटी पे ये टूल लाइफ है. तो अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाया, टूल लाइफ घटेगा. नाउ यू टेल मी द मैन्युफैक्चरिंग टाइम तो 2 मिनट है एक पीस को मैन्युफैक्चर करने में. नाउ हाउ मेनी पीसेस आर यू मैन्युफैक्चरिंग? ओनली, देखो, ओनली इन 10 मिनट्स यू आर चेंजिंग द टूल. So for each piece it is 2 minutes. So therefore you are manufacturing 5. Now you tell me the tool changing time is 8 minutes. वो तो change नहीं होगा सर. वो क्यों change होगा? Because removing the tool and installing the tool, it is taking 8 minutes. What is TT by NP? देखो 8 by 5. बोलो 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 बोलो. Look at numerator is same. Can I write this as, मेरे प्यारे बच्चों, can I write this, इधर देखो, can I write this as 3 by 8 by 15? Can I write this as 3 by 8 by 15? Yes sir. देखो 3 1s 3 5s 8 by 5. 3 1s 3 5 8 by 5. तो क्या हुआ सर? पहले t by tt was 8 by 15. Now it is 3 times 8 by 15. Means my tool changing time per piece has become 3 times. So when the velocity is increasing, the tool changing time is also increasing. The reason is when you are cutting at high velocities, the tool life will be less. When the tool life is less, it is manufacturing only less components. Therefore, frequently you are changing. Therefore, tool changing time per piece is increasing. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? इसीलिए ये बट देखो, ये 3 times हो गया सर. First it was 8 by 15. Now it is 3 times. So therefore, at low velocity it was less. Let us say at what was the velocity sir? 10. At देखो, अरे अरे यार, at 10 meter per second, let us say the tool changing time is, देखो 8 by 15. And at 20 meter per second, देखो at 20 meter per second, it has become 3 times of this 3 times. इससे बढ़ गया सर. Hope you understood everyone. Is it clear? सर और कितना क्लैरिटी से बताऊं सर? और कितना क्लैरिटी से बताऊं सर? और कितना क्लैरिटी से बताऊं सर? Please tell me, is it clear? So this is the tool changing time. This is the tool changing time. This is the machining time and this is the non-productive. बहुत बढ़िया सर, अच्छा समझ में आएगा. Now I want the total cost. तो क्या करेंगे सर? Total time. I'm really sorry. I'm calculating. अभी cost भी कुछ नहीं है सर. Total time. Now let us see what is the total time. देखो, total time में क्या करना चाहिए सर? At this particular velocity, my dear loving students, suppose this is the velocity. इस velocity पे, मान लो इस velocity पे I have to calculate the total time. At this velocity, this will be the tool changing time, ये वाला. So इस velocity पे ये vertical distance you will tool holding and ये वाला
यू ऐड दिस प्लस दिस, सारे ऐड करने के बाद तो क्या होगा, एक नया ग्राफ आएगा। ध्यान से सुनो सर, ये तो कांस्टेंट है सर, इसका तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जस्ट ये शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये कांस्टेंट है, सो द कर्व विल फॉलो लाइक दिस ओनली, बिकॉज व्हेन यू आर एडिंग बोथ, जब ये दोनों ऐड करते हैं तो यू विल गेट, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, एक सेकंड इधर देखो सर, एक सेकंड, y is equal to x, y is equal to x plus 5, क्या फर्क है दोनों में? सो व्हेन द कांस्टेंट इज एडेड, जस्ट द ग्राफ विल शिफ्ट। तो क्या होगा सर, ये जब ये कांस्टेंट ऐड कर रहा है, जस्ट ग्राफ शिफ्ट होगा। सो ये नेचर ऐसे ही रहेगा सर, दीज आर द वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स, ये ऐसे ही रहेगा, ग्राफ विल शिफ्ट, एंड देयरफॉर इफ यू वांट द टोटल टाइम, it will be something like this, my dear students. It will be something like this, and I'll be teaching this in economic order quantity industrial. So the total time will be, total time for single product, this will be the total time. Why it is varying like this? Because इसमें सारे ऐड करो सर, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड करने के बाद ये आ रहा है सर, when you add, so it is, this is nothing but total time. होप यू अंडरस्टूड सर। क्या ये बात सभी को समझ में आई? बट इट इज टोटल टाइम पर पीस। इफ यू फॉरगेट दैट, यू आर गॉन। सभी लोगों को ये ग्राफ समझ में आया सर? इतना प्यार से समझाया सर मैं, सही बोला सर। इस बंदे में कुछ है सर सिंप्लीफाई करने का, बोलो रे। नहीं बोलते सर, नहीं बोलते, क्योंकि अगर बोलेंगे तो मेरा बड़ापन आएगा। मेरा बड़ापन नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि आपका बड़ापन आना चाहिए। ये भी है सर। क्लियर और नॉट क्लियर? एक सेकंड, इसको चार्जिंग लगा क्या? वाह, मजा आया। बदल रमेश भयंकर, बदल रमेश भयंकर, चलो मजा आया। अंडरस्टूड सर? क्रिस्टल क्लियर और नॉट क्लियर? डॉक्टर विवेक सोनी, स्टॉप सर। व्हाट डू यू वांट? फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, it is not the cost. For high productivity, I want to manufacture in small time more pieces. In small time. देखो एक सेकेंड, देखो when I'm changing the velocity, देखो when I'm changing the velocity, when I'm, मेरे प्यारे बच्चों, when I'm changing the velocity, the time is decreasing. It is reaching minimum somewhere, bhayo bhayano. It is reaching minimum somewhere, bhayo bhayano. Minimum somewhere, and again it is increasing. What do you want? I want one component to be manufactured at the lowest possible time, and that velocity we call it as optimum velocity. इसको बोलते हैं optimum velocity. This is the optimum velocity for what? Here along this, what is changing? Velocity is changing. This is the optimum velocity for what? Low production time or high productivity. Productivity means more number of components produced in smaller time. So please note down that this velocity is known as optimum cutting velocity for minimum manufacturing time, for minimum production time. बात समझ में नहीं आया? इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम, एंड दिस टाइम वी कॉल इट एज ऑप्टिमम टाइम करस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ गया सर सभी को? हाँ, तो क्या करो सर आप? हाउ कैन आई गेट? देखो एक बार, ग्राफ इज डिक्रीजिंग, रीचिंग मिनिमम, इंक्रीजिंग. दिस इज द टाइम, दिस इज द टोटल टाइम. This time is changing with velocity. Whenever you want maximum or minimum, you differentiate with variable and equate it to 0. आप क्या करेंगे? वेरिएबल से डिफरेंशिएट करके उसको 0 करेंगे, तो आपको क्या आएगा? मिनिमम. इस मिनिमम टाइम के लिए एक्चुअली यू वांट मिनिमम टाइम. Whenever you want something maximum or minimum, you differentiate with variable and equate it to 0. I want the time minimum. If I want the time minimum, you differentiate this time with respect to the variable is velocity. All other parameters are constant. You differentiate the time with variable and equate it to 0, you'll get the condition.
क्या ये बात सबको समझ में आई सर? क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? यस। अब देखो सर आराम से, लेट अस टेक दिस एंड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आराम से, टेंशन लेने का नहीं है। देखो, फॉर मिनिमम टाइम, dt by dv is equal to 0. Understood sir? क्या 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 सर? सिर्फ टोटल टाइम वाला ग्राफ का कर्व नीचे आ सकता है, वही रहेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वही तो बोल रहा ना सर, व्हेन द वेलोसिटी इज चेंजिंग, पूरा माहौल चेंज हो रहा है सर। व्हेन द वेलोसिटी इज चेंजिंग, my cutting times and the machining times and the tool changing times are changing, so I'm finding out, अरे यार मैं ये एक ऐसा समय कैलकुलेट कर रहा हूं, आई एम कैलकुलेटिंग वन सच टाइम वेयर द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ सिंगल कंपोनेंट इज मिनिमम। ये तो नीचे ही रहेगा ना सर, पूरे कंपेयर टू ऑल दिस इट विल बी मिनिमम। वही तो कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके करो सर, पुट करो dt by dv, there is no velocity, 0, pi dl by f, 1 by v, देखो देखो 1 by v, all are you have to differentiate v, 1 by v is v power minus 1, n into x power n minus 1, so this will be minus 1 v power minus 2 minus 1 by v square, so इसका differentiation होगा minus 1 by v square. Is it clear? Beautiful sir. Pi dl by f c power 1 by n, pi dl, ये तो कांस्टेंट है, tt इज ऑल्सो कांस्टेंट। देखो देखो एक सेकंड, x पावर n, n इंटू x पावर n माइनस 1, n इंटू x पावर n माइनस 1, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0. So therefore my dear students, ओके अब देखो, आई डू वन थिंग सर, ये माइनस है, इसको उधर ले जाना, ये तो 0 है सर, दिस टर्म, ये तो माइनस है, उधर ले जाना, तो पाई डी एल बाई एफ सी पावर 1 बाई एन, ये टी टी 1 बाई एन माइनस 1, सुनो ध्यान से, कैन आई राइट दिस एज वी पावर 1 बाई एन माइनस 2, वी माइनस 1 माइनस 2, कैन आई राइट दिस एज वी पावर 1 बाई एन बाई वी स्क्वायर, लिख सकता हूं सर इसको v पावर 1 बाई n बाई वी स्क्वायर, करेक्ट ना? इसको लिख सकता हूं, इसको, दिस शुड बी इक्वल टू, यू टेक दिस टू दैट साइड, इट विल बी पाई डी एल बाई एफ वी स्क्वायर. प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू, आर वी क्लियर? अरे सिंप्लीफिकेशन सर जी, इट इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन सर जी. सो देखो पाई डी एल बाई एफ सी पावर 1 बाई एन टी टी 1 बाई एन माइनस 1, तो v पावर 1 बाई एन माइनस 2 मीन्स नीचे आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू पाई डी. ओके देखो क्या रे बच्चों, इधर देखना, दिस एफ इज गॉन, हाँ जी सर जी, this v square is gone, then I think we can cancel out pi dl is gone, so finally we are left with bhayo bhainon tt into 1 by n minus 1, ये तो v square cancel होगा, v power 1 by n is equal to 1, और v power 1 by n is equal to 1 by tt into 1 by n minus 1. Any problem, sirs? Any problem, sirs? If you want v power 1 by n, it will be 1 by 100% correct, sirs.
देखो, और हाँ कहीं पे गलत किया सर, कुछ मिस हुआ। ये कौन लेना रे? c पावर 1/n, c is missing. अब सही है। This I am taking it to this side, this I am taking it to this side. अब सही है। Now it is correct. Now raise both sides with power n. If I raise with power n, it will be n. Sorry. अरे मेरे को भी क्या हो रहा है? If I raise power n, n by n is gone. If I raise power n, it will be c by 1 by t, 1 by n minus 1 whole power n. I'm raising both sides with power n. Please tell me, is it clear? Please tell me, is it clear? I'm raising both sides with n, power n, n by n gaya, n by n gaya. So n, okay. This I'll write as v into 1 by n minus 1 into tt, 1 by n minus 1 into tt, whole power n is equal to c. ये क्या है सर? This is the condition for minimum production time or maximum productivity. Clear? एक बार देखना सर, it is something like v t power n is equal to constant, something like, and this is nothing but it is the tool life. This v t power n is constant, so therefore for minimum time, for minimum production time, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर। For minimum production time, the tool life t is equal to v, देखो v के प्लेस में v है, c के प्लेस में से t पावर n, आप बताओ t के प्लेस में क्या, n के पावर n, t के प्लेस में क्या है, 1 by n minus 1 into tt, where tt is tool changing time. मस्त डेरिवेशन आ गया सर. So, and you should remember only this. If you want the production time to be minimum, if you want the production time to be minimum, if you want the production time to be minimum, the tool life is 1 by n minus 1 into tt. अगर आपको production time minimum चाहिए, the tool life will be 1 by n minus 1 into tt. उसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होगा? सो आई विल राइट दिस एज ऑप्टिमम टाइम. ऑप्टिमम इसको बोलते हैं ऑप्टिमम टूल लाइफ, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन और मिनिमम टाइम. सो यहां पे लिखूंगा ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर मिनिमम टाइम T naught is equal to, ये वाला है सर, 1 by n minus 1 into tt. मेरे प्यारे बच्चों, if you want the production time to be minimum, this will be the tool life. Or, you know, Vt power n is constant, or V naught T naught power n is constant. Already T naught is known. So if I put the T naught value here, I will get this velocity. And that is the optimum cutting velocity at which you get the minimum production time or maximum productivity. So इसका मतलब ये है, if you want the time for manufacturing a single piece to be minimum, if you want the production time for a single piece to be less, this should be the cutting velocity and this should be the tool life, and already tool life is given. So from tool life, Tt will be given, N will be given. From this I'll calculate T naught. And I substitute in this equation, I'll get V naught. So that will be the optimum cutting velocity for minimum production time. क्या ये बात सभी को समझ में है सर? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सर. I don't know whether you have understood or not. कितना प्यार से समझाया सर ने.
हे भगवान, मुश्किल है सर आपको समझाना. सीरियसली टेल मी, हैव यू फॉलोड रे? 100% क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया. अंडरस्टूड ना? याद रखना, सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखना. जस्ट रिमेंबर वन इक्वेशन. फॉर मिनिमम प्रोडक्शन टाइम और फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, the tool life will be 1 by n minus 1 into tt, where tt is, यहां पे लिखता हूं, I'll write everything very clearly. Don't worry, sirs. Everything I am explaining very, very clearly. Yes. No. Actually, this was done by Gilbert. This was done by Gilbert. उनका भी कंट्रीब्यूशन है सर, उनका भी कंट्रीब्यूशन है टेलर का. ऐसा नहीं कि इस कंट्रीब्यूशन इज नॉट देयर. दिस वाज डन बाय गिलबर्ट. दिस इज गिलबर्ट्स एनालिसिस. ओके, राइट. देखो एक सेकंड. फॉर मिनिमम production time or maximum productivity, tool life T naught, this is optimum to life, this is optimum to life, is 1 by n minus 1 into tt, where tt is tool changing time. If this is in minute, this will be in minute, and this we call it as optimum tool life for minimum production time. Or maximum productivity. Okay, देखो एक सेकेंड. Then V naught T naught power n is constant. Therefore, V naught is equal to V T power n is constant. VT power V naught is C by T naught power n, and therefore V naught is the optimum cutting velocity for minimum production time. Just ये याद रख लेना. Enough. Hope you understood, sir. Is the concept clear, sir? मस्त मजा आ गया. So this is the first part of economics of machining. I think there is no doubt because I explained everything in a crystal clear manner, how the graphs are coming, how we are deriving, how the differentiation is done, and everything is explained. And those who are preparing from objective point of view, just remember this equation. This is the tool life. Just, my dear loving students, just remember, my dear loving students, bola main, remember this equation. That's it, sir. Okay. Okay. Right. Now we'll take the second case. मजा आया ना? सर बोलो सर, कुछ तो बोलो. एंजॉय कर रहे हैं सर हम सब्जेक्ट. दे आर एंजॉयिंग द सब्जेक्ट. इससे पहले भी आप कहीं पढ़े होंगे. कोई पढ़े हैं इससे पहले? कुछ फर्क लगा? सीरियसली मैं पूछ रहा हूं. Then case 2, minimum cost of production. थोड़े लोग क्या सोचते हैं ना,
पैसा बचाने का। हाँ सर, प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे दूसरे से बड़ा था, फर्क है। ओके, वेरी गुड। फर्क का मतलब पॉजिटिव फर्क है या नेगेटिव है? फर्क का मतलब चेंज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, सुनो, फॉर सम पीपल मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे गो फॉर मिनिमम कॉस्ट। फॉर सम पीपल टाइम इज इंपॉर्टेंट, सो दे गो फॉर मिनिमम टाइम। ओके, चलो, जस्ट गिव मी 1 मिनट सर, आई एम बैक। 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। आप भी ब्रेक लीजिए, यू टू टेक ब्रेक फॉर 1 मिनट, आई एम बैक। ओके, क्या बोल रहा है ये? अपन रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्या बोलता है सर? ये अपन रिपीट क्यों के क्या रिपीट कर रहे हैं? अरे यार, ये तो पागल ही हो गया, ये तो पागल ही हो गया। फर्स्ट केस क्या था सर? आपको एक काम मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना है, दैट वाज द फर्स्ट केस। सेकंड केस, आई वांट टू कंप्लीट, आई वांट टू कंप्लीट इन सच वे दैट द कॉस्ट इज मिनिमम। दो बोथ केसेस आर डिफरेंट ना। हे राम, ये कहां से आया हर्षित? आई हैव नॉट अंडरस्टूड हर्षित। तो ये मिनिमम प्रोडक्शन टाइम
whatever you are manufacturing for minimum time maximum productivity के लिए ये किए. दूसरा क्या है? Cost. क्या अगर आप कम समय में प्रोडक्शन कर रहे हैं, does it mean you are manufacturing at less cost? आप मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, does it assure you minimum cost? अरे यार, इसको हुआ क्या? No one is commenting. अरे यार, मैं बोल रहा हूं सर, व्हाट आई एम सेइंग, नो वन इज देयर इन द क्लास. कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है. ये तो दुख लगता है सर. एक टीचर स्ट्रगल कर रहा है एंड यू आर आयश कर रहे हैं. क्लियर? दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टू डिफरेंट केसेस. आपको जो केस चाहिए, इफ यू वांट मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गो फॉर सेकंड केस. If you want minimum time of production, go for first case. Suppose the demand is very high. Market mein, the demand is very high. Means in less time you have to manufacture more components. You go for that case. नहीं, सब yes बोल रहे हैं, लेकिन हर्षित नहीं बोल रहा. He asked the question, I have answered, but he is not replying. तो मुझे दुख लग रहा है सर. Next time onwards, I will not answer to your questions. It really hurts, you know. कीर्तन प्रकाश एक है, अगर उसके डाउट क्लियर होता है, वो क्लियरली बोलता है, सर नाउ क्लियर. अच्छा लगता है. ही क्लियरली से, सर नाउ इट इज क्लियर. एवरी टाइम ही राइट्स, यू नो, मुझे अच्छा लगता है कीर्तन प्रकाश. एवरी टाइम ही राइट्स, समझ, ही विल आस्क सम डाउट्स. इफ आई क्लियर, यस सर नाउ इट इज क्लियर. तो अच्छा लगता है. ये क्या है यार? ये हैव यू फॉलोड बोथ टू केसेस सेपरेटली? दो अलग केस एक ही केस में डिस्कस किया. Which case did we discuss? Minimum production time. Now the second case is minimum cost. Both are different, sir. Production time is different, production cost is different. Yes or no? अरे यार, ये लोगों को क्या करूं मैं? Clear or not clear, sir? अरे वो हर्षित कहां गया? देखो, ही इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग. कुछ तो बोले तो नेटवर्क प्रॉब्लम बोलता है. मजा नहीं आ रहा सर आप लोगों को पढ़ा के. दिस मच पेन आई एम टेकिंग, बट देर इज नो मजा. Next time onwards, I will not answer to his questions. मैं clarity से बोल रहा हूं सर. Now, okay. Minimum cost. अच्छा, उसका ब्रेक टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ. बड़ा आदमी है ना. ओके, समझ गया, समझ गया. चलो, very good. Now, my dear students, let C naught be the machining cost. First, I'll explain very clearly. Let C naught be, ये बहुत important है सर. Now, whatever I am teaching is very, very important. Let C naught be machining cost. समझा सर? अब बोल रहा है पूरा दुनिया उधर इधर होने के बाद. Let C naught be the machining cost. ध्यान से सुनो, ये मशीनिंग कॉस्ट होता क्या है? रनिंग द मशीन, लेबर कॉस्ट, ऑल
running the machine, labor, everything is involved in that. Let C naught be the machining cost per unit time, maybe per hour, generally maybe per hour or per minute, per unit time. Generally, what does it mean? So in order to run the machine, machine is consuming power, and who is working on that? Operators. Operators, hourly charge, machines charge, all put together. Let us say C naught be the machining cost. समझ में आ रहा है सर? Let C naught be the machining cost. नहीं आया, बोलो बोलो रे बाबा, कहां गए रे वो? समझ में आया? C naught be the machining cost per unit time. That time may be hour और जो भी है, ठीक है सर. Now stop. Let CH be, तो ये मतलब है सर, एक्चुअली मशीनिंग टाइम जो भी है, द लेबर जो होता है ना, ऐसा नहीं कि टूल चेंज करने वाला दूसरा, ऑपरेट करने वाला दूसरा, ऐसा कुछ रहता है. नो, द सिंगल ऑपरेटर. इट्स नॉट दैट द वन हु इज चेंजिंग द टूल इज डिफरेंट, द वन हु इज, ऐसा नहीं, सेम पर्सन इज डूइंग. Definitely his hourly rate will be fixed. For example, we are paying some hourly rate, say for example some 800 or 1000 per hour. Exactly, we are paying, that is fixed, that is the one. Now stop sirs, बहुत important चीजें बता रहा हूं. Very good. How many times do we have? ध्यान से सुनो सर, यहाँ पे first you should know all costs. पहले मैं सारे costs explain करूंगा सर. पहले मैं I'll explain all the costs. First I'll explain all the costs. ध्यान से सुनो. Part handling time. Part handling time is TH. Means for loading the workpiece on the tool and for unloading the workpiece on the tool, let that time be TH. Let that time, part handling time be TH. Let that time be TH. Okay, समझ में आ रहा है? And you know, he is charging C naught, the operator, machining cost. He is charging C naught per hour. So can't I calculate the holding cost? Handling cost, part handling cost. अरे यार, for example, he is charging, for example, 500 per hour. या फिर ऐसा करेंगे, मिनट में ही कन्वर्ट करेंगे. 600 per hour. It means 10 rupees per minute. 10 rupees per minute. For 1 minute, he is charging 10 rupees. That is C naught. C naught is the labor charge, machining charge. जो भी मशीन कर रहा है उसके चार्जेस है. C naught. Very good, sir. Understand. Let us say the loading and unloading of the workpiece, let us say it is 2 minutes. So what will be the part handling cost? For 1 minute, he is charging 10 rupees. If the workpiece loading and workpiece removing, that is part handling, workpiece handling, is 2 minutes. For 1 minute, he is charging 10 rupees. For 2 minutes, it will be 10 into 220. इसका मतलब ये हुआ, if the part handling time is TH, the cost of the part handling time is TH. The cost of that is, last case में हम सिर्फ we were focusing on time. इस बार हम cost पे calculate करेंगे. So what will be the cost, sir? For 1 minute he is charging C naught. For TH minutes it will be C naught into TH. So क्या ये पहला cost समझ में आया सभी को? Is the first cost clear, sir? Is the first cost clear? Is the first cost clear? No, okay. Now I'll write very clearly. Cost of, एक सेकंड. Let the part handling time. सर आपको लैमिनार फ्लो के क्वेश्चंस मिल गए इन द ग्रुप? यू गॉट लैमिनार फ्लो क्वेश्चंस ग्रुप में? मिल गए ना? I shared.
let the part handling time be th. Let the part handling time be th. क्या मतलब हुआ sir? What do you mean by part handling time? Something like setting the workpiece on the machine. Setting the workpiece on the machine. So you are loading the workpiece, you are unloading the workpiece. That is your th. So therefore, part handling cost ये बात, let it be our equation 1. Is this clear sir? अगर आपको समझ में आया तो हाँ बोलना. Second, let the machining time, everything is per piece. First piece देखो workpiece is loaded on the machine tool. Single piece के लिए loading unloading time is th, single piece. So cost will be C naught into th. Let the machining time be tm. क्या कोई बता सकते? The labor is the operator. देखो जो ऑपरेटर है वो कितना ले रहा है सर? वो लेबर कितना ले रहा है? C naught. C naught per unit time. C naught per unit time. But the machining, for example, let us say the labor is charging 50 per minute. Imagine, operator. Let the machining time for one piece be machining time. Let the machining time for one piece be 2 minutes. It means what is the cost of machining? For one piece, it is taking 2 minutes. It is taking 2 minutes. But the operator is charging 50 per minute. So how much is the machining cost? अरे बोलो रे 100. कैसा? Therefore, cost of machining anyone is equal to C naught into Tm. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? Cost of machining will be equal to C naught into Tm. Hope this is clear. If the machining time is Tm, for one piece he is charging. Everything is per piece, sir. Everything is per piece. Hope this is clear. हाँ या ना? ये सेकंड हो गया. थर्ड, टूल चेंजिंग कॉस्ट. दिस इज मशीनिंग कॉस्ट. सो एक मैं ऐसा करता हूं सर, आराम से. टूल चेंजिंग कॉस्ट. एनीवन ध्यान से सुनो सर. द टूल चेंजिंग टाइम इज tt, but always remember, when you are changing the tool, already before that some components are already manufactured, but I want tool changing per piece. Same last में कैसा किए? This is the time for changing the tool per piece. So अगर cost चाहिए तो C naught से multiply करो. Who is changing the tool? The same operator only, who is charging C naught rupees. The same operator is loading the workpiece, so C naught into TH. The same operator is machining, C naught into TM. The same operator is changing the tool, T naught into, देखो TT is not for one piece. Divide with NP, it will be for per piece. So therefore, tool changing cost will be equal to C naught into TT by NP. नहीं आया सर समझ में? प्लीज बताइए क्या ये समझ में आया? नहीं सर. अरे यार कैसे स्टूडेंट्स है सर, आप जान ले रहे सर. यू आर ईटिंग माई ब्रेन सर. यू आर ईटिंग माई ब्रेन सर. मैं बोल रहा था सर, लेट द टूल चेंजिंग टाइम बी 8 मिनट. But before I change the tool, already some components are manufactured.
So you have to divide that 8 minutes equally amongst all the components which are manufactured, because we are calculating per piece. Therefore, TT is 8 minutes divided by number of pieces, let us say NP. Therefore, 8 minutes by number of pieces, let us say 8. 8 by 8, 1 minute per piece. But the 1 minute is for change, 1 minute is the changing time per piece. So what is the cost? C0 into TT by NP. Hope this is clear. Let us take this as equation number 3. भाइयों बहनों, क्या ये बात सभी को समझ में आई? मेरे प्यारे प्यारे सज्जनों, is it clear? हे भगवंता नमो नारायण पार्वते हर हर महादेव. सर सब देख लिए. अभी कुछ कॉस्ट बचा है सर? Anyone in the class? We have seen tool changing cost. बहुत ध्यान से सुनो सर. We have taken tool changing cost. We have taken machining cost. We have taken part handling cost. अभी कुछ बचा है सर? सोचो एक बार. Just think. 1, 2, 3 आ गया. अभी कुछ बचा है सर? सोच के बताना. I'm asking you a question. Tool cost. Excellent, sir. Excellent, sir. You know, my dear students, actually, there is the tool is something like this. Actually, before you make a tool, the blank is something like this, sir. ये actually ऐसा होता है. यहां से हम कट करते हैं सर. देखो, कटिंग एज ऐसा, कटिंग एज ऐसा. फ्रॉम हियर यू मेक. डेफिनेटली कटिंग एज के लिए तो पैसा चाहिए ना सर. व्हेन यू आर मेकिंग अ टूल, यू आर ग्राइंड करके पूरा निकाल रहा है. ये तो कॉस्ट डालना ही पड़ेगा ना सर. ये तो डालना ही पड़ेगा सर. टूल का कॉस्ट, बिकॉज टूल इज कटिंग एंड यू आर फॉरगेटिंग द टूल कॉस्ट. You are taking tool changing cost, but tool ka cost should be included na. Now look at carefully. Actually tool को कैसे लेते पता है सर? वो मैं बताता हूं सर. Let CT be the tool cost पर कटिंग एज. सर कुछ भी समझ में नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से इट इज 100 रुपीज. सीटी इज 100 रुपीज पर कटिंग एज. बहुत ध्यान से सुनो सर. 100 रुपीज पर कटिंग एज बोलता है वो. सुनो सर, एक सेकंड. मैं आपको ब्यूटी बताऊंगा सर. विद द टूल आई विल एक्सप्लेन. इसीलिए केम में टाइम लेता है सब्जेक्ट होने के लिए, क्योंकि इन डेप्थ होता है. आगे आपको कोई डाउट ही नहीं होता है. जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट में आपको मार्केट में छोड़ूंगा, यू बैटल विथ स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपका लेवल अलग होता है. मैं ना ये कटिंग एज मैन्युफैक्चर किया सर. इस कटिंग एज मैन्युफैक्चर करने के लिए आई टुक 100 रुपए. आई रिपीट सर, टू मैन्युफैक्चर दिस कटिंग एज, मतलब ये कटिंग एज का मतलब अलोन नहीं, ये पूरा मिला के इस मेन. विच वन इज इन्वॉल्व इन कटिंग सर? मेन कटिंग एज. ये पूरा मैन्युफैक्चर करने में एक कटिंग एज के लिए, दिस इज सिंगल कटिंग एज ना, बिकॉज दिस इज नॉट इन्वॉल्व मच. This is not involving much. This is a single point cutting tool. So therefore, this primary edge, principal side cutting edge is the principal one. इस cutting edge के लिए, इसको मैन्युफैक्चर करने के, इसको ग्राइंड करने के लिए, इस टूल को लाने के लिए एक कटिंग एज. देखो, सिंगल कटिंग एज लाने के लिए, लेट अस से आई चार्ज 100 रुपीज. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. सुनो ध्यान से. एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड पर पीस. Everything is calculated per piece. Let us say it is the fresh cutting edge. I have not manufactured a single component with this cutting edge, and the
द वर्कर, मतलब देखो ऑपरेटर अलग होता है सर, प्लीज कटिंग टूल को ग्राइंड करके टूल को मैन्युफैक्चर करने वाला अलग है, ऑपरेटर जो मशीन आप कर रहा है वो अलग है. लेट अस से द अमाउंट इन्वॉल्व इन दिस इन ग्राइंडिंग दिस फॉर वन कटिंग एज, एक कटिंग एज करने के लिए दिस एज के लिए लेट अस से ही इज चार्जिंग 100 रुपीज. मेरा क्वेश्चन है सर, विद दैट कटिंग एज fresh new one, are you manufacturing single piece? आप बताओ सर, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं सर. जो फ्रेश है, आर यू मैन्युफैक्चरिंग सिंगल? नो. विथ दैट कटिंग एज यू आर मैन्युफैक्चरिंग NP, number of pieces. That's why you have to calculate when he gives per cutting edge for that edge, with that उस edge के लिए, ध्यान से सुनो सर, for that cutting edge, उस edge के लिए, with that edge we are manufacturing NP. So आपको क्या करना है सर? You have to divide not per cutting edge, whatever 100 rupees is there. For example, to manufacture this tool or to regrind the tool, ग्राइंड करने के लिए मैं 100 रुपए लिया, एक एज लाने के लिए, एक एज लाने के लिए 100 रुपए लिया. But with that edge, let us say I'm manufacturing 10 pieces and you have to calculate per piece. So I should write 100 by 10 number of pieces. So that will give me not per cutting edge, that will give me per piece. Grinding cost per piece, मुझे वो चाहिए. Tool cost per piece. So how much tool is consumed in manufacturing one piece, वो चाहिए सर. क्या ये बात सभी को समझ में आए सर? अगर इफ ही इज गिविंग पर एज, मेरे भाइयों बहनों, अगर वो पर एज दे रहा है, नहीं आया सर समझ में, नहीं आया सर. अगर वो पर एज दे रहा है, इफ इज गिविंग पर एज, आई शुड नॉट राइट पर एज. सो देयरफॉर नाउ आई राइट द टूल कॉस्ट per piece is equal to, this is for one edge, if I divide with number of pieces, I will get the tool cost or grinding cost per piece. ठोको ताली, clear हुआ? I should do this. This is the fourth one. तो आपको ना एक edge के लिए he has given, with that edge you can manufacture n pieces. So therefore if you want the grinding cost or cutting cost, the grinding cost or tool resharpening cost, you should divide with number of pieces. बात समझ में आ गई सर? वाह वाह, clear? Now total cost will be first cost, second cost, third cost, fourth cost. So total cost will be, ऐसा ही नहीं छोड़ूंगा सर आपको, कन्वेंशनल क्वेश्चंस करवाऊंगा सर, क्योंकि ईएस के लिए मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं आपको. सो सारे गेट ईएस सबके लिए 1 C0TH, 2 C0TM, 3 C0TT by NP, 4 CT by NP. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. yes sir, विवेक बाबू, yes sir, yes बाबू, he gives per cutting edge. समझ में आया ना? yes. now we are safe sir. have you understood sir? आज मुझे अच्छा क्या लगा पता है सर? जितने स्टूडेंट्स पहले क्लास को आए थे, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिटेन्ड. जनरली 1-2 जाते हैं सर, जनरली 1-2 जाते हैं, लेकिन आज सारे अटेंड कर रहे हैं. अच्छा लगा. अब आपको क्या करना है सर, भाइयों बहनों? अब आपको क्या करना है सर? ध्यान से सुनो सर. The machining time already I have given pi dl by fv. हाँ या ना? देखो देखो,
द मशीनिंग टाइम, भाइयों बहनों, द मशीनिंग टाइम इज गिवन बाय, कहां गया रे वो, द मशीनिंग टाइम इज गिवन बाय पाई dl by fv, pi dl by fv, and you also have np. Already we know number of pieces. Yes. कुछ नहीं है भाइयों बहनों, इसको मैं थोड़ा यस पुट करना है, यहां पे पुट करो. सो द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सी नॉट टी एच सी नॉट टी एम. व्हाट इज टी एम? पाई डी एल बाई एफ वी. देखो सी नॉट टी एम, व्हाट इज टी एम? पाई डी एल बाई एफ वी प्लस सी नॉट टी टी, सी नॉट टी टी बाई एनपी. एनपी क्या है? सी नॉट टी टी बाई एनपी, सी पावर 1 बाई एन एफ वी. ये ऊपर जाएगा तो पाई डी एल वी पावर 1 बाई एन. आई रिपीट सर, देखो सी नॉट टी टी बाई एनपी, सी नॉट टी टी बाई एनपी. एनपी क्या है? सी पावर 1 बाई एन एफ वी बाई, ये ऊपर जाएगा. इज इट क्लियर? बिल्कुल सर. प्लस सी टी बाई एनपी, अगेन एनपी इज व्हाट सर? सी पावर 1 बाई एन एफ वी, वी पावर 1 बाई एन पाई डी एल. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? हे भगवंता, नमो नारायण, पार्वती, हर हर महादेव, शंभो शंकर, भोलेनाथ. कुछ नहीं, आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द मशीनिंग टाइम, टीएम, एंड नंबर ऑफ पीसेस दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है सर. सो इसको थोड़ा नीटली ड्रॉ करेंगे सर, नीटली लिखेंगे. देखो सी नॉट पाई डी एल बाई एफ वी प्लस सी नॉट पाई डी एल टी टी. देखो सी नॉट पाई डी एल टी टी, सी पावर 1 बाई एन एफ, ये v पावर 1 है, ऊपर जाएगा, v पावर 1 बाई एन माइनस 1 प्लस सी टी बाई सी पावर 1 बाई एन एफ पाई डी एल. हाँ जी सर, v पावर, अगेन दिस विल गो टू द टॉप, 1 बाई एन माइनस 1. होप दिस इज क्लियर. नाउ विल ड्रॉ ग्राफ्स. अब हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे सर. सो दैट्स वाई I will not give you arbitrarily. First, I will draw graphs. नहीं, I'll give you equations. मजा आया सर? सर बहुत खतरनाक वे में जा रहा है सर, मुझे पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी बच्चे इंटरेस्ट शो नहीं करते सर. वो थोड़ा दुख होता है सर, यहां पे दर्द देता है सर. हर्ट्स, इट हर्ट्स. क्या करते हैं सर? Now let's plot the graph. देखो सर, let's plot the graph. कूली देखना सर. I think मेरे हिसाब से इसको ऐसे लिखेंगे सर. नहीं, बाद में लिखेंगे. क्यों? इंडिविजुअली लिखने के बाद विल एड अप. On this axis, I am taking cutting speed. On this axis, it is not time. Now it is cost. बहुत बढ़िया. ठीक है, अब देखो आगे बढ़े. नाउ आराम से देखो सर, आराम से, बिना टेंशन से. लेट मी ड्रॉ वेरियस ग्राफ्स. इफ यू सी द फर्स्ट वन,
कैसा लगेगा आपको? देखो द फर्स्ट वन, क्या ये फर्स्ट वन, इज देयर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ वेलोसिटी सर? अरे यार पार्ट हैंडलिंग, द मशीन इज नॉट रनिंग, आप सिर्फ वर्कपीस को डाल रहे, लोडिंग अनलोडिंग, it has nothing to do with velocity, sorry, cutting velocity, so therefore that cost is constant. Hope you understood sir. So इसको लिखेंगे, कहां गया रे वो, कहां गया रे वो, यहां लिखता हूं सर। देखो देखो एक सेकंड, पार्ट बहुत बढ़िया, इट इज पार्ट हैंडलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट दिस देखो, पार्ट हैंडलिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट, दिस इज एनीवन, इसमें क्या है सर? टूल चेंजिंग टाइम कॉस्ट, टूल चेंज कॉस्ट, एंड इट इज द टूल कॉस्ट। देखो इट इज द टूल कॉस्ट, इट इज द टूल कॉस्ट। देखो ये टूल का कॉस्ट है सर, सीटी टूल कॉस्ट, जनरली टूल कॉस्ट ज्यादा होता है सर, होता है नहीं होता सर? टूल कॉस्ट ज्यादा होता है सर। ओके, टूल चेंजिंग कॉस्ट ज्यादा होता है या टूल कॉस्ट ज्यादा होता है? टूल को जस्ट चेंज करना है सर, दैट विल बी लेस, टूल कॉस्ट विल बी मोर। नहीं आया समझ में? अरे टूल चेंज करने के लिए जस्ट देयर इज अ टूल एंड यू आर चेंजिंग, बट टूल कॉस्ट में टूल का कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। नाउ देखो द सेकंड इज मशीनिंग, लुक एट, वेलोसिटी इज इन द डिनोमिनेटर, so when the velocity is increasing, this is a machining cost is decreasing. Q sir? So physically I'll explain. When the velocity is increasing, why the machining cost is decreasing sir? क्योंकि पहले वो देखो, उसको तो घंटे का फिक्स है, his hourly rate is fixed, his hourly rate is fixed. So let us say he is working slowly and per hour he is manufacturing 10 pieces. He is manufacturing slowly, per hour he is manufacturing 10. But now he is manufacturing at higher speed. He'll manufacture more pieces. तो क्या होगा सर? When he is manufacturing more pieces, the machining cost क्या होगा सर? कम हो जाएगा ना, क्योंकि more number of pieces are manufactured. Understood or not sir? Understood or not sir? Yes. Therefore, this यहाँ पे velocity नीचे है, यहाँ पे velocity से, तो machining cost will decrease because you are, what do you mean by machining cost sir? For that labor, for example, इधर देखो, नहीं है समझ में, I'll explain sir, don't worry, don't worry. Let us say at a velocity of 10 meter per minute, let us say he is manufacturing some 20 pieces. And labor charge, let us say operator charge is, for example, 500 per minute. ठीक है सर? Now, when he is manufacturing 20 meter per minute, let us say he is manufacturing how many sir? Let us say he is manufacturing some 40 pieces. In the first case, how much time he is taking to manufacture sir? In the first case, how much time he, for 1 minute, देखो क्या कर रहा हूं सर मैं? Let us say he's manufacturing, देखो क्या हो रहा है सर? Don't worry, don't worry. My dear loving students, let us say at low velocity, in 1 hour, he is manufacturing 20 pieces. At higher velocity, in 1 hour, he is manufacturing 40 pieces. 1 hour means, इसको ऐसे करेंगे सर, मैं इसको 30 करूंगा, इसको 60 करूंगा, so that calculation थोड़ा easy हो जाएगा. देखो, in 1 hour he is manufacturing, 1 hour means in 60 minutes he is manufacturing 30 pieces. So in 1 minute, how much is he manufacturing sir? In 1 minute, अरे यार, एक प्रोडक्ट को देखो 60 मिनट्स में, 1 आवर में 60 मिनट्स में 30 पीसेस हो रहे हैं सर, तो 1 मिनट में कितना हो रहा है सर? 1 मिनट में कितना हो रहा है सर? 1 मिनट में हाफ, करेक्ट ना? 0.5 पीसेस, करेक्ट? इधर आइए,
इधर आइए, 1 मिनट में 0.5 पीस, इधर आइए सर, उसका आवरली रेट तो सेम ही है ना सर, whether he is manufacturing more or less, hourly I am paying the same. So when I am paying the same, देखो आप देखो, in 1 hour let us say he is manufacturing 60 pieces. 1 hour 60 pieces means 60 minutes 60 pieces. In 1 minute he is manufacturing 1 piece. समझ में आ रहा है सर? So अब देखो, in 1 minute 1 piece means, सेकंड केस में 1 minute 1 piece means 500 rupees. देखो 1 minute 1 piece, 1 minute 1 piece means you are paying 500 per minute. You are paying 500 per minute. For 1 minute he is manufacturing 1 piece. Second case means you are paying 500 per piece. अरे 500 per minute. For 1 minute you are paying 500. समझ में आ रहा है? For 1 minute you are paying 500. तो एक पीस के लिए 1 minute means 1 piece, 500 per minute means 500 per piece, एक पीस को 500. इधर आइए, 1 minute 0.5 only, 1 minute 0.5 only means by 0.5 means you are paying your what is happening per piece, it is going 1000 rupees per piece. सर थोड़े लोगों को समझ में नहीं आया, चलो लीव इट, थोड़े लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब इतना सिंपल एप्टीट्यूड नहीं आ रहा है तो आप क्यों रे, मैं बोल रहा हूं सर, एक सेकंड, केस 1, लीव इट सर, लीव इट, केस 1, लीव इट सर, लीव इट, देखो मैं बताता हूं सर, डोंट वरी, लेट अस से when cutting at low speed, in 1 hour, let us say 60 minutes, he is manufacturing 30 pieces. So in 1 minute, he is manufacturing only 0.5 piece. So you are paying 500 per minute. It means 500 minute. What is minute? 0.5 piece. एक मिनट को 0.5 piece, मतलब 500 by, it is 1000 per piece. At low velocities, you are paying 1000 per piece. Let us say velocity has increased to 20 meter per minute, high velocity. So क्या होगा सर? At high velocity, let us say in 60 minutes, he is manufacturing 60 pieces. क्योंकि velocity is high now, therefore high velocity means more number of parts. तो क्या होगा सर? His charge is 500 per minute. 1 minute means 1 piece. Can I write this as 500 per minute? Minute means 1 piece. Means you are paying at higher velocity, per piece you are paying only 500. At lower velocity, per piece you are paying 1000. So therefore, as the velocity is increasing, the cost per piece is decreasing. Understood, sir? Hey Bhagwan, ये भी कॉमन सेंस रे, जब हाई वेलोसिटी, उसको तो आवरली रेट हम एक ही दे रहे ना रे, वी आर वर्कर ऑपरेटर, वी आर पेइंग सेम. ऐसा नहीं कि इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग मोर पीसेस आई विल गिव, नो, हिज आवरली रेट इज, ही इज अ मंथली सैलरी बेस्ड, उसको आवरली उतना ही है सर. तो इफ ही इज मैन्युफैक्चरिंग मोर पर पीस, इट विल बी लेस ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर पीस विल बी लेस. समझ में आया ना? यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इधर आइए. सो देयरफॉर this is inversely proportional. So the machining cost is decreasing when the velocity is increasing because you are manufacturing more components. So therefore the machining cost is, bhaiyo bhainon, the machining cost is decreasing. Idhar dekho, the machining cost is decreasing as you are producing more number of components. The machining cost, देखो common sense भी देखो सर. देखो ये कॉस्ट है, वेयर इज द वेलोसिटी? डिनोमिनेटर में. व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, दिस कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. दिस इज मशीनिंग कॉस्ट. एंड अदर्स देखो, 1 by n, let us say n is 0.25. When n is 0.25, 1 by 0.25 is 1 by 4. 1 by 0.25 is 4. 4 minus 1 is 3. So when velocity is increasing, it is directly numerator, it is increasing. So therefore it follows this. भाइयों बहनों, both are following the same trend. दोनों का पावर सेम है ना. So one is like this and the other is like this.
नहीं है सर, बोथ आर इंक्रीजिंग। देखो यहां पे लिखूंगा सर, किसका कॉस्ट ज्यादा होगा सर? डेफिनेटली टूल कॉस्ट विल बी मोर, टूल का कॉस्ट, चेंजिंग कॉस्ट विल बी लेस। दिस इज टूल चेंजिंग कॉस्ट and this is tool cost. Hope you understood. Tool cost means regrinding, grinding cost. नहीं आया सर समझ में? प्लीज बताइए, have you understood sir? अरे same thing I am writing sir. Is this clear? These are the costs. Now if you want the total cost, मेरे प्यारे बच्चों, again it will be the same. This is the total cost. If you add all, this will be the total cost. And I want that total cost to be minimum. देखो, I want that total cost to be minimum. And that cost, that minimum cost, इसका मतलब ये हुआ, if you want the total cost to be minimum, you should cut at this velocity, and that is known as optimum velocity. What do you mean by optimum velocity? It is, देखो दोनों भी optimum velocities है. First case is optimum velocity for less production time. The second case is optimum velocity for higher cost, lower cost. अभी again what I am supposed to do sir? अभी मैं क्या करूं सर? The cost को you differentiate with velocity, equate it to 0, you will get the condition. अरे यार क्या स्टूडेंट्स है सर, मुश्किल है सर आपको पढ़ाना। लेट अस टेक द टोटल कॉस्ट क्लैरिटी आ गया सर? आया नहीं है सर? इफ दिस इज क्लियर आई विल प्रोसीड। पता नहीं यार, ये सेंसर अजीब है, ये अजीब ही है सर। वेरी गुड, होप यू अंडरस्टूड। सो फॉर मिनिमम टोटल कॉस्ट, this is the total cost. Differentiate करो, there is no velocity here, 0. देखो C naught pi dl by f is constant. What is the differentiation of 1 by v? 1 by v means v power minus 1. V power minus 1 is minus 1 by v square. This is minus 1 by v square plus C naught pi dl tt by c power 1 by n f. इसको डिफरेंशिएट करो, 1 by n minus 1 into v power 1 by n minus 1 minus 1 n into x power n minus 1. बहुत बढ़िया। लास्ट वन देखो, लास्ट वन, इसको ct pi dl by c 1 by n f, again it is 1 by n minus 1 v power 1 by n minus 1 minus 1, and this should be equal to 0. Please tell me, have you understood sir? Yes. So minus c naught pi dl by f v square, कुछ कॉमन ले सकते सर ये दोनों में। देखो मैं बताता हूं व्हाट इज दैट कॉमन, मैं बताता हूं सर। पाई dl by c power 1 by n f, pi dl by c power 1 by pi dl c power 1 by f, okay, 1 by n minus 1 v power 1 by n minus 2, देखो 1 by n minus 2 1 by n minus 2 ये भी कॉमन लिए, इनटू pi dl c power 1 by n, करेक्ट। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। करेक्ट, दिस शुड बी इक्वल टू 0। हाँ जी सर जी। सो आई विल, यू टेक दिस टू दैट साइड, इट विल बी पाई dl by c power 1 by n f
1 by n minus 1 v power 1 by n by v square. देखो इसको by v square कर रहा हूं, इसको by v square, v power 1 by v square into c naught tt plus ct is equal to c naught pi dl by fv square. So fv square is gone, pi dl is gone. So I will take this and go to the next slide. ये तो simplification है सर, and don't क्या बोलते हैं, raise any doubts because it is just a simplification. So therefore 1 by n minus 1 v power 1 by n कहीं पे गलत किए. Correct. Any problems, sirs? I think it is correct. Not 1 by n. Correct. Correct. So you raise both sides with n. n को raise करना दोनों sides. c naught गया तो tt डिवाइड करो, c naught गया tt प्लस ct by c naught. आपको समझ में नहीं आया? What is ct? It is the tool cost per cutting edge or grinding. Sometimes he says grinding cost per cutting edge बोलता है. Tool cost per cutting edge और grinding regrind cost per cutting edge बोलता है. Both are same. By c naught is machining cost per unit time and tt is tool changing time. tt ये तो आ गया. तो अब ये सही है सर. If I raise the power on both sides n तो ये आ गया सर. Absolutely fine. Absolutely fine. Now let us take this. It is something like bhayo bhayano. It is something like v into 1 by n minus 1 tt plus grinding cost per unit per cutting edge or tool cost per cutting edge by machining cost whole power n is equal to c. It is something like vt power n is equal to c. तो ये क्या होगा सर? This is the tool life sir. देखो this is the tool life. This is the tool life. किसके लिए? For minimum cost. So therefore tool life for minimum cost, tool life for minimum cost, or this is also known as optimum tool life. Do not get confused. Both are optimum only. One is optimum tool life for minimum production time. One is optimum tool life for minimum production cost. Optimum tool life for minimum cost is equal to
इसको n से रेज मत करना सर। v t पावर n, v t पावर n इज कांस्टेंट, दिस इज t, ये ब्रैकेट में है सो t है सर, दिस इज द ऑप्टिमम लाइफ। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम when you calculate the velocity, that will be the optimum velocity, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया। so this is the one sir, देखो this is the optimum, यही optimum है सर। so wonderful sir, so therefore my dear loving students, and अब लिखूंगा सर v naught t naught power n is constant, this v naught is equal to optimum cutting velocity for minimum cost। शायद आपको ये सारे डेरिवेशन समझ में आए होंगे सर। सिर्फ व्हाट आर द टेकअवेज, आज आपको क्या लेके जाना है सर घर को, मैं बताता हूं आज आपको क्या लेके आना। देखो टी ऑप्टिमम, दिस इज द टूल लाइफ, 1 by n minus 1 into tt. What is this? This is for minimum production time or maximum productivity. So T optimum 1 by, this is tool life, इस पे क्वेश्चंस आ रहा है सर, इनटू tomorrow I'll do lovely questions. All of you, have you understood today's class sir? कितना टफ कॉन्सेप्ट था लेकिन आसान बना है। यस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में यही होता है सर। क्या ये बात सबको समझ आए सर? मजा आया सर? नहीं है सर आपको? सही बोलो सर, पैसा वसूल हर एक क्लास में हो रहा है आपका पैसा वसूल। ग्रेट, सो विल स्टॉप हियर एंड मॉर्निंग विल मीट फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड कल ये क्वेश्चंस के बाद आई विल स्टार्टिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ मेटल कटिंग, फर्स्ट पार्ट ऑफ मेटल कटिंग, दैट इज कटिंग टूल मटेरियल्स। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू। मेटल कटिंग सही चल रहा है? खुश हो कि नहीं? चलो बाय बाय, शेयर योर फीडबैक, शेयर योर फीडबैक, शेयर योर फीडबैक। अच्छा, वीडियो रिपीट हुआ है, ओके कोई बात नहीं। ओके चलो बाय बाय, प्लीज शेयर द फीडबैक, प्लीज शेयर द फीडबैक आज के क्लास का। ओके बाय बाय।